Please come. Please have a seat. So Riya, can you please introduce yourself? Yes, sir. So my name is Riya, as you mentioned. थोड़ा loudly बोल सकते हैं? Yes, sir. I'm born in Muzaffarpur and I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya, Gurgaon, and graduation from Sri Aurobindo College in English Literature in the year 2016. Okay. And my hobbies include reading books and following international affairs, as well as writing diary occasionally. Okay. तो 2016 के बाद आप क्या कर रही हैं? So I worked for 2 years, 1.5 years approximately in Himgiri Hyundai as a receptionist job. Okay. Yes. और सर उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए 2 अटेम्प्ट्स दिए और फिर सर साइमल्टेनियसली बीपीएससी के लिए कर रही थी और दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू. Okay. So you have mentioned international relations as your hobby, right? यस सर. तो अभी कॉन्फ्लिक्ट एक चल रहा है, इजराइल का कहीं किसी कंट्री से चल रहा है. सो व्हाट यू कॉल इट दैट एज इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट? सर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. कैन यू प्लीज जस्टिफाई दैट? Sir, because Hamas, they are representing in their sense that they are representing the people interest of Palestine. So their war is against Israel is for the land of Palestine. If you are mentioning, Riya, just be a bit louder, please, Okay. as I am even not able to listen. Okay. so if you are saying that Hamas is representing Palestine, then what is PLO? What PLO is doing? Yes, sir. So PLO is representing the area. The West Bank area is represented by PLO. Are you sure? West Bank or Gaza? So PLO West Bank, the Palestine Liberation Organization. That's yes, sir. West Bank is represented by PLO, and Hamas represents Gaza. So Hamas is representing Palestine as you are saying, right? तो sir, इंडिया के yes, sir. What they believe. ठीक है. अभी Internationally, they are designated as a terrorist organization. इंडिया जिस दिन हमास का अटैक हुआ था इजराइल पे, उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था और इजराइल को सपोर्ट किया था. Yes, sir. आफ्टर सम टाइम जब इजराइल ने गाजा में एंट्री किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसको कंडेम किया. तो वेयर वी स्टैंड, हमारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है. समटाइम्स वी आर कंडेमिंग हमास, समटाइम्स वी आर कंडेमिंग इजराइल. सर हमारा स्टैंड ये है कि सर जो हमास ने किया अक्टूबर 7 को, वी आर अगेंस्ट दैट, बट सर वी ऑल्सो फेवर 2-state solution in Israel, in Palestine. So that's why we are maintaining a sort of balance. No, why this flip flop then? So because of I think rising death casualties of civilians. Are you sure? Yes, sir. Can you please mention any one principle of India on which that is based? जो हमारी बातें हमने कही हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सॉरी सर. ठीक है. आपने रिसेंटली कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? सर रिसेंटली मैंने अभी सर there's a climate change book on Bill Gates written by Bill Gates, as well as खुशवंत सिंह Train to Pakistan. अच्छा, क्लाइमेट चेंज का एक अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है. Yes, sir. Which conference is that? COP28 in Dubai. Okay. Are you sure? Yes, sir. Okay. उसमें मेजर उसके इश्यूज क्या थे अभी जिस पे रोड ब्लॉक बना था? सर मेजर इश्यूज में ये था कि फॉसिल फ्यूल का दे आर सेइंग कि फॉसिल फ्यूल का सर वो चाह रहे थे कि सर आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट फेज आउट. आई थिंक सर दे वर डिमांडिंग फेज आउट. कोई बात नहीं. अगर क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं तो बिहार में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट किस तरह से, आर यू श्योर कि बिहार में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट दिख रहा है? दूसरी चीज़, बिहार में वैसे कौन से डिजास्टर्स हैं जो काफ़ी प्रिवेलेंट हैं? यस सर. सर नॉर्थ बिहार में फ्लड का इशू है और साउथ बिहार में मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, लेकिन ड्रॉट का सर होता है. और उसके अलावा सर लाइटनिंग एक इशू है. और सर नॉर्थ बिहार थोड़ा सा अर्थक्वेक जोन में भी है. क्लाइमेट चेंज का कुछ इफेक्ट दिख रहा है हमारे यहाँ? यस सर. राइज फ्लड के जो इंस्टांसेस हैं वो बिकॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग वो बढ़ रहे हैं. मेजर रीज़न क्या है फ्लड का नॉर्थ बिहार में? सर रिवर्स का डायरेक्शन में टेक्टोनिक थोड़ा सा कोसी के लिए स्पेसिफिकली, और सर उसके अलावा बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो हिमालयन रिवर्स है, इस वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से वाटर जो है वो उसका लेवल बढ़े. अच्छा, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है. Yes. हु इज़ योर फेवरेट थिंकर? सर आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स वेबर रिलीजन. कैन यू प्लीज
Mention one. So Max Weber, in his Protestant Ethics, he mentioned that how capitalism is linked with a particular religion, and that is Protestant. And why Protestants are so rich? Because they follow the principle of calling the work is their calling. So I like that. आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, 2 साल वहाँ, 3 साल आपने रहा होगा, Yes, right? sir. कब तक रहे थे आप दिल्ली में? सर दिल्ली में सर मेरी पूरी एजुकेशन वही हुई है। अभी मैं लास्ट 1 ईयर से मुजफ्फरपुर में। ओके, अभी जो स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया है काफ़ी एमपीज को, व्हाई दैट डिस्क्वालिफिकेशन टुक प्लेस? What was the main reason behind that? So the MPs were demanding explanation from the government because of that security breach that happened in Parliament, and because of that they were not maintaining the dignity of Parliament. Is that justified? So justified, sir, I think it's too much. One should not, they have fully silenced the criticism. So I don't think it's reasonable. तो आपका कहना है कि जो एमपीज हैं उनको क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, बट गवर्नमेंट शुड नॉट, आई मीन द लेजिस्लेचर शुड नॉट डिस्क्वालीफाई देम. Sir, योर स्टैंड इज दिस, राइट? sir, disqualification, sir, I think it is disproportionate currently what is happening, because they have sort of eliminated the opposition members from the parliament. It's like they have it's become a party office sort of. Okay, fine. Riya, Yes, sir. people say that cinema represents the society in which we live. Yes. With the huge success of recent movies like Pathan, Jawan, Tiger 3, Animal, these are too much of violence in these movies. Yes, sir. Are we really so much violent in our society also? So no, sir, I don't think, because in Animal, what I have read from the reviews, it's too much violent they have shown there, and so I think what they are trying to represent does not designate with what we stand as a society. Okay, let us say that the cinema do not represent us, but the success of these movies is really baffling me. Does it bother you also? Sir, I haven't seen any one of the movie you mentioned, so I can't comment on it. Okay, Riya, who was Aurobindo Ghosh? So Aurobindo Ghosh, initially he was a freedom fighter who took participation in the 1905 Swadeshi movement, and later on he became a spiritualist and a philosopher who established an ashram in Pondicherry. Have you been to Pondicherry? No, sir. Okay, you did not get a chance. Was he an extremist, moderate, or revolutionary? So he was designated as an extremist at that time, because he wanted Swaraj should be, it should not be limited to Bengal only. So he wanted it to spread to other areas, other regions of the country. So he was in the camp of extremist. Okay. Could you please tell me any newspaper, any article, any newspaper, any book which he has written? The name? Yes, sir. He was author of a magazine, which Vande Mataram, and along with that, commentary on Gita, as well as his own autobiography, Life Divine. Okay. Riya, I'll be naming 3 Muslim leaders of our independence. Just tell me the differences in their ideologies. Maulana Azad, Sayyid Ahmad Khan, and Muhammad Jinnah. Maulana Azad, sir, he was a Democrat, I think, and he was not in favor of Pakistan. Sir, what you mentioned, second name was? Sayyid Ahmad Khan. So he was an extremist, revivalist. He was in favor of Darul Harb. Darul Harb, sir, I cannot. Sure. And so this Jinnah, he was initially he was a liberal, but later on he changed his stance and he was a proponent of demand for Pakistan. Riya, given a chance, you are posted in Bihar, you get this job, what you are aiming for. What major 3 things you would want to do for the women empowerment of this society? So first of all, literacy, because what I have noticed in my village, there is lack of it. Along with it, so child marriage is a major issue in Bihar, and so third
third major is I think job opportunities. Okay. What was your role in Himgiri Hyundai? So I was at a reception initially for 1.5 years. Okay, so do you have some idea of how automobile work? So I was at a service center. So Okay, you were at the service center. Yes. Okay, who's your favorite author? Whose book you like to read? So there are many, but I enjoy reading Agatha Christie because of detective novels. Harlequin Pirate, yes. Why is diary writing so important to you that you do it on a regular basis? So because I am a single child, so I have no siblings, or so diary writing is my way of expressing my thought, and it helps me relieve it. Thank you, Riya. We're done. Just wait outside. We'll call you for your feedback. Thank you, sir. Thank you. Come, please come. Yeah, there are only two things which can stop you from clearing this exam. One is your low voice. Okay, sir. You need to be louder. Yes, sir. शुरुआत में you were a bit nervous, but gradually interview में you were at ease. कोई समस्या नहीं थी, ठीक है? जैसे right now you are sitting, थोड़ा पीछे चले जाओ. This is the correct way of sitting, ठीक है? Do not sit आगे. मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम we are not begging for the job, right? Okay, sir. We are seeking for it. We are asking for it. Okay, sir. It should look like that. Okay. स्टैंड लिया आपने उस एमपी वाले में, दैट वाज गुड, ठीक है. जो भी उसका आउटपुट आता दैट इज डिफरेंट. स्टैंड लेना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं रहना है, Okay, sir. है ना. हाँ. क्या सही है क्या गलत है सबको पता है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है उसमें. Okay, sir. उसमें एक एंगल आप और भी जोड़ सकते हो कि बाय लॉ इट मे बी करेक्ट, देयर एग्जिस्ट अ रूल बुक व्हिच सेज कि दिस कैन बी डन. Yes. So legally it is correct, but ethically it is not correct. Yes. This can be added. So अपना स्टैंड रख सकते हैं. हाँ, स्टैंड रख सकते हैं, थोड़ा सा मैच करके कि लॉ क्या कहता है और क्या हुआ है. लॉ तो जो कहता है वो तो हम कह सकते हैं ना. स्पीकर के क्या राइट्स हैं वो तो हो सकता है. एग्जैक्टली. वहाँ ये भी मेंशन किया जा सकता है कि स्पीकर हैव पावर टू डिस्क्वालीफाई अकॉर्डिंग टू लॉ. अब वो लॉ के अकॉर्डिंग है नहीं है वो अलग चीज़ है कि क्यों किया गया है. Okay, sir. राइट. लॉ के अकॉर्डिंग किया जा सकता है ठीक. और उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे उसमें. ठीक है. और बाकी वॉइस को थोड़ा और ज़्यादा मॉड्यूलेट करिए, मिरर प्रैक्टिस करिए आप. Okay, sir. Voice. अगर हाँ, क्योंकि आवाज़ आएगा ही नहीं तो क्या समझ पाएगा लोग. सर ठीक ये है. फर्स्ट टाइम था तो नहीं इसके कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छा रहा. ठीक है सर. इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने सोचा था बट You have high chances of clearing. यू डिड वेल. सर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इशू था वो ठीक नहीं था. एकदम बढ़िया था. थोड़ा सा हमास पैलेस्टीन में कंफ्यूजन हुआ था, मैंने कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन डाला था वो, अच्छा. लेकिन ठीक था. अच्छा रिस्पांस अच्छा था. ठीक दैट वाज है सर. एक्सपेक्टेड. डायरी राइटिंग में बढ़िया, डायरी राइटिंग इज गुड. सब अच्छा है, बस वॉइस पे कंट्रोल कर लो. एक आध सवाल गलत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. No one knows everything. यस सर. If I sit there, you ask me 10 questions, I will not know 5. नहीं यस सर. But be confident. That's all. This is not your knowledge test, Okay. right? This is your personality test. The main feature of your personality comes only when I get to listen to you, Actually, right? yes sir. Thank you. This is your marks. We have marked you. Okay. Thank you.